Sir? Hello everyone. I see most of the people joined in. Before we get started for the day, I'll just briefly touch on the agenda, and then we'll take any questions or concerns so far. So far, guys, we have understood big data as a problem and Hadoop as a solution. And we have seen that Hadoop is primarily divided into two parts, which is HDFS and MapReduce. And MapReduce is used for batch processing, which is slow. So future may there will be Spark, which is going to replace it. So we are going to learn about Spark. Java में लिखा गया है MapReduce और Scala प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है Spark. ठीक है, लेकिन Spark आप Java या Python से भी कर सकते हो. That is also there. उसके बाद हमने बात की थी कि HDFS का आर्किटेक्चर क्या है, जिसमें मेन चीजें आती हैं कि आपके रेप्लिकेशंस, रैक अवेयरनेस, हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस. ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं.
या इंटरव्यू भी छोड़ो, मतलब जब आप रियल टाइम में काम करोगे तो रोज ये शब्द सुनोगे कि नेम नोड, डेटा नोड, या मास्टर नोड, प्राइमरी मास्टर, सेकेंडरी मास्टर, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को अच्छे से समझ लो। और फिर मैप रिड्यूस का आर्किटेक्चर, जिसमें कि मैपर चलते हैं, रिड्यूसर चलते हैं, मैपर और रिड्यूसर के बीच में शफल एंड सॉर्ट फेज होता है। नंबर ऑफ मैपर्स एंड रिड्यूसर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें 100 मैपर चलाने हैं या 200 रिड्यूसर चलाने हैं, ये सब भी हम प्रोग्रामेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। After all this, now we are starting the hands-on with the Hive, and a Hive is what? It's a SQL solution on Hadoop. That's what Hive is, and we are doing the hands-on either on our personal machines or the online view, which is available freely for all of us. Okay. So we will continue with the detailed discussion today on the HQL, which is Hive query language. But before that, if anyone is having any questions, queries, please go ahead. Someone was asking. I think Nitika or Nishtha. Someone was asking. Sir, the queries written over here are saved, or it's just a history? Someone has written these queries. Yeah, these are just history, as in whenever you keep executing queries, the last 50 or 100 queries, they are shown here. So if you look at, तो whoever logged into this, क्योंकि सब डेमो से लॉगिन करते हैं, राइट? तो सबका जिसने भी एक क्वेरी चलाई होगी, हाँ, अब तुम भी कुछ क्वेरी चलाओगे तो वो भी यहाँ पर ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी, लेटेस्ट सबसे ऊपर आती हैं। लेकिन ये किसने चलाई थी वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि यूजर नेम सबका सेम है, तो हमें ये नहीं पता लगेगा। ओके सर। अच्छा, एंड सर, ये कास्ट क्या करता है? हाँ हाँ, ये सब तो अभी हम आएंगे इन सब चीजों पे। कास्टिंग होती है। कास्टिंग मतलब एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना ना। जैसे एक इंटीजर है 1, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्लोट वैल्यू में, विच इज 1.0। ठीक है, अगर 1 को मतलब इंटीजर वैल्यू को फ्लोटिंग वैल्यू में या डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो आप कास्टिंग करते हो। होता है ना कि आप किसी चीज को कास्ट करते हो, शेप देते हो, चेंज करते हो। सिमिलरली अगर फ्लोट से इंटीजर में करना है या इंटीजर से स्ट्रिंग में करना है, कि 1 जो है उसको स्ट्रिंग 1 मानो, विच इज लाइक विद इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। तो जब भी ये सब काम हम करते हैं हमें कास्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लो आपको मैंने दिया एक स्ट्रिंग है 1 और बोलूंगा इसमें ना जरा 9 ऐड कर दो, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 19, बिकॉज स्ट्रिंग के साथ नंबर कंकैटिनेट हो जाता है। या फिर ये एरर मार देगा कि भैया एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है, यू कैन नॉट परफॉर्म दिस ऑपरेशन। तो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है कि भाई इस स्ट्रिंग को पहले कास्ट कर दो इंटीजर में, so that ki this will become 1, and then when you add 1 with 9 it will give you 10. Okay Nitika, clear? We will talk about these things in detail, but these are very very important things. Casting is one of the most important part of any SQL. Okay guys, so let's start this in a proper order. तो हाइव में हमने कल, अच्छा उससे पहले किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके, आई टेक दैट एज नो। आप लोग सेटअप करते रहो, आई विल हेल्प यू लेटर, मे बी ऑन थर्सडे, अगर किसी का सेटअप नहीं होता है। बट मीनवाइल आप हाइव यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, सारा कोडिंग कर सकते हो। ओके, हमने कल हाइव के आर्किटेक्चर की बात की थी, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। कोई मुझे बताएगा हाइव के आर्किटेक्चर में 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। द ड्राइवर पार्ट एंड द मेटा स्टोर पार्ट. A driver part is the most important part because it internally further contains 4 components. What are those? Parser, planner, optimizer and executor. Very good Aditi, Vipul. Okay. Okay, good.
तो we understood about the architecture. After that we understood the working of Hive. कि भाई आप Hive में जब कोई टेबल बनाते हो तो टेबल की इंफॉर्मेशन मेटा स्टोर में जाती है, लेकिन जब उस टेबल में कोई डेटा स्टोर करते हो वो HDFS में जाता है, राइट। तो अगर मैं Hive के आर्किटेक्चर की बात करूं कि भाई ये आपका ड्राइवर है जिसमें 4 इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, प्लानर, एग्जीक्यूटर, पार्सर वगैरह, और ये आपका मेटा स्टोर है, राइट। यूजर ने एक टेबल बनाने की रिक्वेस्ट भेजी तो वो यहाँ पर आएगी ड्राइवर के पास, और ड्राइवर उस इंफॉर्मेशन को मेटा स्टोर में डाल देगा कि भाई एक नई टेबल बनाई है राहुल ने आज, ठीक है। इस केस में HDFS पे क्या होगा, ये आपका HDFS है, तो इस टेबल के नाम से एक फोल्डर यहां बन जाएगा, अभी उसमें डेटा नहीं होगा बस। अब कल को राहुल ने फिर कुछ डेटा भेजने के लिए ड्राइवर को बोला कि भाई कुछ डेटा डालना है, तो ड्राइवर मेटा स्टोर में चेक करेगा कि जिस टेबल में डेटा डालना है वो टेबल एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो ये भी देखेगा कि उसके अंडरलाइंग HDFS फोल्डर तो किसी ने डिलीट नहीं कर दिया, क्योंकि कोई इतना स्मार्ट निकला कि वो टेबल तो है लेकिन उसने मैनुअली पीछे से HDFS में से फोल्डर ही उड़ा दिया, तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा कि भैया टेबल तो है लेकिन उसका फोल्डर नहीं मिल रहा मुझे HDFS में। अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर वो जो भी डेटा आप भेज रहे हो यूजर, वो डायरेक्टली एक मैप रिड्यूस जॉब के थ्रू आपके HDFS में राइट होना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। तो ये आपकी अल्टीमेट प्रक्रिया है पूरी एंड टू एंड। Yes, Gulzar, that will be semantical error. Semantical as in which you cannot मतलब जो आपने नहीं किया, मतलब अगर सिंटेक्स में एरर है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये एक सिमेंटिकल एरर मानी जाएगी। yes, सर तो मतलब यही जो आप कह जो आपने बताया था कि टेबल जिस फाइल में बनाया था फाइल ही हट चुकी है इसलिए ऐसा आ रहा है, वो सिमेंटिकल एरर। हाँ, एब्सोल्युटली। Anyone, any other question? Sir, yesterday you talked about external and managed table. तो सर अगर हमारी एक्सटर्नल टेबल है HDFS में तो दोनों ही स्टोर होंगी, तो इफ वी डिलीट द एक्सटर्नल टेबल तो HDFS में वो रहेगी, लेकिन जो हम क्वेरी करते हैं टेबल पे करते हैं तो वो एरर नहीं थ्रू होगा, नहीं, खाली डेटा होगा ना HDFS में। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने एक्सटर्नल टेबल तो उड़ा दी लेकिन डेटा उसका पड़ा हुआ है यहाँ पे, राइट? हाँ, तो जब आप क्वेरी करोगे तो वो आपको सिमेंटिकल एरर आ जाएगा ना, कि मेटा स्टोर में चेक होता है ना पहले की टेबल है कि नहीं, मेटा स्टोर में वो टेबल मिलेगा ही नहीं क्योंकि आपने तो वहां से ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पर पड़ा होने से कोई मतलब नहीं है ना, अगर आपने टेबल मेटा स्टोर से डिलीट कर दिया, HDFS में अगर उसका फोल्डर पड़ा भी हुआ है क्योंकि वो एक्सटर्नल टेबल थी, तो भी आप उस पर हाइव क्वेरी नहीं चला सकते। समझ रहे हो फर्क? अगर आपने मेटा स्टोर से कुछ उड़ा दिया एक्सटर्नल टेबल तो आप उस पर हाइव क्वेरी नहीं चला सकते, बट मान लो आपकी टीम में कोई और एक बंदा है जो कि मैप रिड्यूस जावा के थ्रू उस सेम चीज को एक्सेस कर रहा है। यस, ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। कुछ लोग उसको जावा मैप रिड्यूस के थ्रू यूज करते हैं, कुछ लोग हाइव से यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेटा स्टोर से उसकी इंफॉर्मेशन हट गई तो हाइव वाले लोगों को तो सिमेंटिकल एरर्स आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन मैप रिड्यूस जावा वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो तो हाइव से बात ही नहीं करते, वो तो सीधा जाके HDFS को एक्सेस करते हैं। तो सर यूजिंग दैट डेटा टेबल दोबारा से रिट्रीव नहीं हो सकती यूजिंग सम क्वेरी? वेरी गुड पॉइंट। हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए हम एक्सटर्नल टेबल बनाते हैं कि अगर किसी ने गलती से वो ड्रॉप कर दी तो और डेटा तो है हमारे पास, तो टेबल दोबारा बनाना इज नॉट अ बिग डील। यूजिंग समटाइम्स वी डू रिवर्स इंजीनियरिंग,
where using the data we can generate the schema of the table. क्योंकि स्कीमा मुझे पता होना चाहिए ना कि उस डेटा में कितने कॉलम है. स्कीमा क्या होता है? किसी टेबल का स्कीमा मतलब उसमें कॉलम कितने हैं. तो मैं डेटा को देख के स्कीमा जनरेट कर सकता हूं और मैं सीधा सीधा अपनी टेबल रिक्रिएट कर सकता हूं. But that's a very good point, Nitika. Anything else? No, sir. Okay. Okay, coming to okay, so Gomini is asking who checks for the folder in the HDFS. Okay, so the process that is here is the driver, right? First of all, driver is taking care of it. Good. But within driver, then there are 4 components, right? There is this parser. So parser checks not only the syntax, but while checking the syntax, okay, it checks for the meta store to look in for the detail of the table as well as the HDFS linkage, if HDFS folder is there or not. So everything is done by the parser. But once parser says everything is okay, मतलब वो basic check कर लेता है, उसको ज्यादा चीजें नहीं पता कि मैप रिड्यूस कैसे चलाना है, तब फिर प्लानर आता है. ओके गोमिनी, तो अल्टीमेटली पार्सर चेक्स एवरीथिंग. या यू राइटली सेड पार्सर. या उसके बाद प्लानर बस ये बताएगा कि इसको एग्जीक्यूट करने के 10-15 तरीके हैं, तो ऑप्टिमाइजर कहेगा कि इसमें से सबसे ऑप्टिमाइज्ड तरीका कौन सा है जो समय और रिसोर्सेज कम से कम ले. इज 1 सेकेंड. ओके, सॉरी गाइज, एक्चुअली देर आर सम मेडिकल थिंग्स, तो उसकी वजह से मुझे 1-2 दिन ऐसा चलेगा, बीच बीच में 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेना पड़ता है, बट देन इट विल बी ओके. ओके, so coming back to this, what we have talked about is कि ऑप्टिमाइजर ये बताएगा कि सबसे ऑप्टिमाइज्ड प्लान कौन सा है. ठीक है, ऑप्टिमाइज प्लान का मतलब ये होता है कि वो एक तो समय कम से कम ले, मतलब एक प्लान होगा जो 10 घंटे में चल सकता है, एक 20 घंटे में, एक 15 घंटे में, तो उनमें से सबसे ऑप्टिमाइज प्लान कौन सा है. और दूसरी बात कि एक प्लान कहता है कि मुझे तो 10 GB का स्टोरेज चाहिए, रैम चाहिए, दूसरा कहता है नहीं मैं तो 5 GB में कर दूंगा और टाइम भी ज्यादा नहीं लूंगा. तो देन जैसा होता है ना कि बिडिंग की जाती है, तो एक तरह से दैट्स व्हाट इट इज. एंड जब सब फाइनल हो जाता है तो एग्जीक्यूटर अल्टीमेटली, मतलब who is responsible for generating the map reduce Java, that is the executor. Okay, so I hope this is clear who plays what role here. Okay, okay, so that's what is the entire end-to-end Hive process. If someone asks you in an interview, explain the Hive end-to-end, this is what you have to explain, all these things. Okay, और एक और चीज जो कल हम बात कर रहे थे कि अभी हाइव जो होता है बाय डिफॉल्ट, जब भी आप हाइव में कोई एसक्यूएल क्वेरी चलाते हो वो पीछे मैप रिड्यूस में कन्वर्ट होती है, लेकिन आने वाले समय में ये नहीं रहेगा. मैप रिड्यूस जो है, मतलब हाइव
का बाय डिफॉल्ट जो बैकएंड है वो मैप रिड्यूस की जगह स्पार्क कर दिया जाएगा, जो कल हमें एक वार्निंग आ रही थी, राइट, कि स्पार्क कर दिया जाएगा या फिर तेज कर दिया जाएगा। ये दो और मैप रिड्यूस के कॉम्पिटिटर्स हैं, मैप रिड्यूस के कॉम्पिटिटर्स हैं, स्पार्क और तेज। So we will talk about both of these, but Spark is like 100 times better than Tez. Okay. तो हाइव मतलब आप, लेकिन पीछे जो भी हो रहा है आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी। बट हाँ, ये जरूर आपको फर्क पड़ता है कि अगर हाइव का पीछे बैकएंड मैप रिड्यूस है तो वो सेम क्वेरी अगर 10 घंटे ले रही है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उसका बैकएंड स्पार्क में या तेज में कर दिया तो हो सकता है कि वो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए। गाइस, इतना ड्रास्टिक डिफरेंस होता है मैप रिड्यूस और स्पार्क में, कि यहाँ पर कोई चीज अगर 10 घंटे ले रही है वो हो सकता है यहाँ पर 1 घंटे में हो जाए, या फिर 10 मिनट में भी कंप्लीट हो सकती है। तो यू योरसेल्फ थिंक कि आप एक एसक्यूएल एनालिसिस अगर करना चाहते हो तो आप कोई 10 घंटा वेट थोड़ी करोगे कि यार मेरी क्वेरी चलती जा रही है। आप तो ये करोगे ना कि आपका काम 10 मिनट या 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो अब ये स्पार्क या तेज वो कैसे करते हैं, अपने आप में वो एक अलग कथा है पूरी, बट वी विल टॉक अबाउट दैट। निष्ठा, ऐसा कुछ नहीं है कि स्काला इज बेटर और स्काला फंक्शंस आर बेटर, नो नो, इट इज द आर्किटेक्चर ऑफ स्पार्क which is better. Okay, a language is never better than other language, remember that. One language is, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, is never better or worse, it's the underlying architecture on which that program is running. तो स्पार्क में अगर मैं स्काला का भी प्रोग्राम चलाऊं, पाइथन का भी चलाऊं, जावा का भी चलाऊं, वो सब 10 मिनट या 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। Okay, so it's about the Spark architecture, the underlying system, not language. Language helps you to write cleaner and shorter programs. A good language like Scala helps you to write program in a simpler way or in less number of lines. And definitely Scala has some good features as compared to Java. But that does not mean that Scala is faster than Java. It's Spark which is faster than MapReduce. Okay, but yeah, that's a very important thing. Guys, 1 second. Okay, guys. Yeah. Any questions? Scala is like Java. Nitika, yeah, Scala is built on top of Java. मतलब पहले जावा को ही लेकर उसके ऊपर स्काला बनाई गई है। ओके,
तो Scala is somewhat a child of Java. It has most features of Java only. तो जिसको Java आती है उसके लिए Scala सीखना is not a big deal. But Scala is a functional programming language. Java is a object oriented programming language. तो अगर आप लोगों ने सुना ही होगा तो there is a object oriented language. तो Java is a object oriented programming language, and whereas Scala, I'm pinging you, okay, is a functional programming language. So in today's world we are moving from object oriented to functional programming. Python supports both, okay, Python supports both, okay. पाइथन में आप लोगों ने एक चीज सीखी होगी, लैम्डा फंक्शंस. तो पाइथन ये चीज बहुत पहले से देता आ रहा है. तो ये लैम्डा फंक्शंस जो पाइथन में होते हैं वो भी अपने आप में फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं, ओके. तो Java is object oriented, Scala is a functional programming, and then Python supports both. For example, if you want to create classes in Python, you can create objects in Python, right? We were talking about these. So that means it's an object oriented language, but you can also use lambda functions in Java. That means it's a functional programming language also. So मतलब lambda functions, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ. फंक्शनल प्रोग्रामिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, बट दिस इज व्हाट इफ समवन आस्क यू, ओके, कि व्हिच इज व्हाट, व्हिच लैंग्वेज इज व्हाट, ओके. then any other questions? Okay, fine, perfect. So I hope now we are clear कि हाइव के पीछे अगर मेरा इंजन, हाइव का इंजन क्या है, मैप्रेड्यूस है, स्पार्क है या तेज है, ठीक है. हम ये इंजन बदल भी सकते हैं. आपके पास गाड़ी है, अब उसमें आपने फोर्ड का इंजन लगाया, आप कल को कहते हो नहीं नहीं मैं तो इसमें कोई और इंजन, टेस्ला का इंजन लगाऊंगा, आई एम जस्ट थ्रोइंग इट अप. तो आप वो इंजन हटा दो, गाड़ी वही है, इंजन हटा दिया, दूसरा लगा दिया, ठीक है. तो अभी भी आपकी स्टीयरिंग वगैरह, बटन, कंट्रोल्स वही है, बट आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई. पहले फोर्ड का इंजन था, फोर्ड के इंजन से बेटर आपने कोई और इंजन लगा दिया, ओके. या पहले आपके पास कोई टाटा का इंजन था, देन आपने फोर्ड का लगा दिया, व्हाटएवर इट कैन बी. तो दैट मींस यू आर चेंजिंग द इंजन टू गेट अ फास्टर परफॉर्मेंस. आपकी गाड़ी तेज भागने लगी. तो हाइव एक तरह से आपकी गाड़ी है जिसके अंदर इंजन जो है वो मैप्रेड्यूस का है. कल को आपने इंजन हटा दिया, वो स्पार्क का लगा दिया, तो गाड़ी तेज दौड़ेगी. तो पहले आप जो डिस्टेंस 10 घंटे में ट्रेवल करते थे, आप वो 10 मिनट में कवर कर लोगे. समझ रहे हो? तो यही है बस. लेकिन आपका जो एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है, मतलब जो आपके गाड़ी के कंट्रोल्स हैं वो अभी भी वही हैं. तो आपको एसक्यूएल विल हेल्प. पीछे चाहे वो जावा मैप्रेड्यूस में चले या स्काला स्पार्क में चले, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सब चीजें आपसे एनकैप्सुलेट और एब्स्ट्रैक्ट कर दी जाती हैं, छुपा दी जाती हैं, ओके. तो Hive is so good that you can change the engine. So how to change the engine? उससे भी पहले how to see कि मैं currently किस engine पे हूँ. तो there are some settings. Set hive dot execution dot engine and let's run it. Guys, you can see my screen. The output is equal to MapReduce. I am asking Hive to tell me भाई तेरा एग्जीक्यूशन इंजन क्या है. वो कहता है MapReduce. मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए. मुझे तो दूसरे जो 2 ऑप्शन है वो क्या है, मुझे तो क्या चाहिए भाई, मुझे तो स्पार्क चाहिए. तो यू विल सेट इज इक्वल टू स्पार्क. 1 second guys. So you will change it to Spark. Okay, so let's run it. Ideally it should not allow me because it's a global session, but let's see if it allow me to do that. Let's check it again. No, it's allowing me. So now you see the engine is a Spark. So let's see how the query will change. So select count of star from EMP. So I'm running a SQL query. Now instead of creating Java code behind, it will create Spark code. So I'm executing it.
So if you see, it's executing here. Okay. हम पीछे क्या कोड बन रही है वो देख भी सकते हैं, वो मैं जब क्लस्टर पे लॉगिन करूंगा तभी दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये फ्री वाला जो ह्यू है इसके सर्वर का, जब मैं सर्वर पे लॉगिन करूंगा अपने पर्सनल पे, तो आपको मैं पीछे ये जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोड जनरेट हो रही है जावा की या स्पार्क की वो दिखा भी सकता हूं, हम ये सब चेक कर सकते हैं। तो इस समय ये क्या कर रहा है, पीछे स्पार्क का कोड चला रहा है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। So because guys it's taking time, I'm killing it up. Okay, let's see. Error running the query, SQL query, java.lang.no class definition found. No class, class मतलब जो आप क्लास बनाते हो, जिससे फिर ऑब्जेक्ट बनाते हो, definition found error, Scala, so it's going to Scala, there are collections, it's not able to find a iterable collection. Okay, so can anyone tell me what is a collection? So Scala is a programming language, right? Even in Java we have collections. In Scala also we have collections, in Java also. What are collections, guys? Any idea? Collections? What are the collections? See, collection is nothing but your collection of objects. As in, if 1 is an integer object, 2 is an integer object, I collect multiple integer objects in an array, so this is a collection. So an array is a collection. Similarly, a set or a dictionary is a collection. So all these advanced data types where you have multiple objects is a collection. That's it. So if someone asks you what are collections, array, list, linked list, queue, tag, lot of things are there. Okay. So here, which collection this guy was looking at? It was not looking at array or list. It was looking at iterable. So there is a collection known as iterable, but it is not able to find it. Somehow it's not available. Iterable collection is what? Guys, if you look at a list internally is also iterable because you can run a for loop. So any object on which you can run a for loop, also a loop, is iterable. So the point here is this iterable class if not available, how can I run this program? Because what this program is going to do, if employee is a table, it will contain multiple rows and you have to iterate over the rows to give me the count. तो अगर आप आइट्रेट ही नहीं कर पाओगे रोज पे तो आप मेरा काउंटर कैसे बढ़ाओगे? पहली रो पर हो गया आप टेबल की तो काउंटर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे आप आइट्रेट करते जाओगे. Sorry. So your iterable object is most important, but no class definition found error. So that's why this query failed. और क्योंकि ये फ्री का सर्वर है पीछे ये, तो इसलिए ये फेल हो गया, लेकिन हमारे पर्सनल जिन लोगों के पास होगा मशीन्स उन पे ये फेल नहीं होगा. तो मैं इसको जब रन करूंगा अपने VMware पे तो ये फेल नहीं होगी. गाइस समझ आया ये एक एक वर्ड जो लिखा है यहाँ पे? यस, नो, डाउट? Anishta, what do you want me to repeat? Actually, it's a too much content. Which part? Okay. So collection, as the name says, is collection of objects. So whenever you have a data type, see, integer is a data type, list is a data type, array is a data type, right? When we talk about int, it can be int x or int y. But
it cannot contain multiple values, right? Either x or y. Matlab int x is different, int y is different. But if I create x equal to a list which is 1 comma 2 comma 3, it can contain multiple objects, like 1 is an object, 2 is an object. So that's what is known as a collection. So in this case, x is not a integer, it's a array of integers or a list of integers. So that's why it's a collection. Okay, Nishtha. So collection is just group of objects, integer objects, string objects, whatever. So which data types allow you to do that? Array, list, dictionary, but not int, float, or double. Okay. So we have seen some important things here so far. So I'm pinging you this query, how you can change your execution engine. Let's change it to तेज also. तेज, वो तेज भाग वाला तेज, ठीक है, इसको वो लोग तेज तेज कह देते हैं, बट ये वो तेज ही है क्योंकि ये चीजें तेज कर रहा है. ये चल गया. नाउ लेट्स सी कि कितनी तेजी आई इसमें. So you have this तेज. So let me ping you this. And now let's run that query again. SQL query. अब SQL query नहीं मिल रही मुझे, तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्वेरी हिस्ट्री में. क्वेरी हिस्ट्री में देखूंगा कि भाई ये क्वेरी कहाँ गई. अच्छा, वो क्वेरी यहाँ दिखी नहीं रही क्योंकि वो चली नहीं गई, तो हम दूसरी कोई क्वेरी चला लेते हैं. Execute it. You got the output. Let me change it a bit. So now SQL query पीछे क्या जनरेट कर रही है? वो तेज का कोड जनरेट कर रही है. अब तेज क्या है अलग चीज है, उसको अभी के लिए लीव इट. बट ये पीछे ना तो मैप रिड्यूस कर रही है ना स्पार्क कर रही है, ये तेज की प्रोसेसिंग कर रही है. तेज इज MPP, like Teradata, massively parallel processing system. Okay, we talked about it, right? What are MPPs? So Teradata is like a massively parallel processing system. So Teज also works like a MPP system. It is not like कि वो पीछे जावा या स्काला जनरेट कर रहा है. It's different. बट यहाँ पर ये भी शायद ना चले बिकॉज फ्री का सर्वर है. इट मे नॉट सपोर्ट दिस. So I'm stopping it. So guys, you again get the error. See, no class definition found error. Org.apache Teज runtime API event. So it's saying that Teज is not supported to run the queries. But if you look at, the good thing is everything is Java related error, right? Because Hive is trying to execute everything behind the scene using Java. It converts everything using Java because it's written in Java. Rather, I would say Hive is written in Java. Okay, so Hive is written in Java. Hive is written in Java. That Java code will generate the map reduce Java. Understand the difference. You are submitting this query, right? But there is this query is going to who? The driver, right? So this driver is written in Java. So someone has written Hive Java, the driver Java, which converts the code to map reduce Java or Spark Scala or Teज. Okay, but first of all, your query went to the driver Java. 1 second, guys.
ओके गाइस, तो आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि ये वाला जावा अलग है, और मतलब ये वाला जावा तो हमेशा रहेगा क्योंकि हाई जावा में लिखा है, लेकिन अब पीछे वो मैप रिड्यूस का जावा जनरेट करे या फिर स्पार्क का स्काला या फिर तेज का एमपीपी, वो अलग बात है। तो इसलिए एरर्स आपकी जावा की आएंगी सारी हाइव में, लेकिन अब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो तेज से बात करने की कोशिश कर रहा है। ये वाला जावा, ये वाला जो जावा है वो ये वाला है। ये क्या कह रहा है कि भैया अगर आप मुझे तेज चलवाना चाहते हो तो मेरे पास ये क्लास, ये एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो जो हाइव का ड्राइवर है वो अपने पास ये नहीं पाता, उसको ये नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए वो फेल हो रहा है। क्योंकि पहले जब उसको ये मिलेगा तभी वो जाएगा तेज के पास बात करने। ऐसा नहीं है, ये जो एरर है ये तेज ने नहीं दी है गाइस, रिमेंबर, ये एरर तेज ने नहीं फेंकी है, ये एरर इसने फेंकी है। 1 सेकेंड गाइस। Okay guys, so this is the whole picture here. Any question before we move ahead? Okay, so we have seen all these errors, like what these errors are, how to change the engines, how to run the queries. On the left hand side you can see all the tables currently available, all the tables, and all these tables belongs to this default database. All the tables belongs to this particular database, default database. So there are so many databases: assignment, sales, TCS, testing. There are different databases. I can create my own database also. Create database. See, it's also helps you to write the queries, and say PGA-07. So we'll execute it. So it creates a database. You click on this refresh button, it refreshes it, and you get the PGA-07. You click on it. There are no tables currently created, so let's create a table inside your database. Right, so first we create a database, and then inside that we create multiple tables. Create table employee. Employee table ka we have to now give some schema as in employee ID, which is of the type integer, employee name, which is of the type string, employee salary, which is of the type say int, or you can say integer. Then after salary you have his uh, department, which is another like string, and then that's it. So
Okay, guys. So we created it. Let's refresh it. So you can see this table is available. Now I am again trying to create this, but if you again try to create a table, you will see that you will get an error. Table already exists, and this is a DDL error, right? We were talking about DDL yesterday. DDL error already exists exception. This is the full stack error. This is the complete error. So this is the Java error, okay? The Java Hive error. So Hive SQL exception, error while processing the statement, it's failed. जब रियल वर्ल्ड में आप काम करते हो तो इस तरह के पूरा आपको एरर को समझना होता है. एरर इज कॉज्ड बाय व्हाट? इज कॉज्ड बाय सी meta store or the metadata, because what happens is आपने शुरू में एक टेबल बना दी थी, अब उसी टेबल को आप दोबारा बनाने जा रहे हो, तो पहले वो ये आपका ड्राइवर है, ये आपका मेटा स्टोर है. पहली बार ड्राइवर ने टेबल यहाँ पे बना दी, अब दूसरी बार आप वही सेम टेबल बनाने जा रहे हो तो मेटा स्टोर में चेक करेगा कि भैया यहाँ तो ये टेबल ऑलरेडी है, तो वो यहाँ से एक एरर थ्रो मार देगा वापस आपको. तो मेटा स्टोर से एरर आई है. क्या एरर आई है? ऑलरेडी एग्जिस्ट एरर. ओके, ये देखो, ये हाइव मेटा स्टोर लिखा है यहाँ पे, ये हाइव मेटा स्टोर की एरर्स हैं. ओके, आपको ये वर्ड दिख रहा होगा बहुत ज्यादा, थ्रिफ्ट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल using which Hive internally talk, like driver talk to Metastore or Metastore talk to driver using a thrift protocol. There are a lot of different protocols available. We will talk about them later, but yeah. So you need to generate the habit of reading each and every word of the log. This is an error log, and you should be able to understand the majority of it. Not everything, but majority of it. Like in your session of Hive, in the Hive session, you got a Metastore error, okay, while creating the table, okay. So you can see the database here, which are different databases available. So this table is already available in this database. तो आप इस database में ये table नहीं बना सकते, दूसरे database में बना सकते हो ये table वापस, बस इसमें नहीं बना सकते. Now let's see the data. Before that, you have to describe the table. When I describe it, I'll see, oh, there is ID, name, salary, and department. So I created a Hive table, and a HDFS folder will be created, and I can see the schema of the table, because that will help me to insert the data, insert into EMP values. तो जब टेबल बन गई, उसको डिस्क्राइब कर लिया, अब उसके अंदर जब डेटा डालना है तो हमारे पास क्या क्वेरी है? DML. अब मैं क्या कर रहा हूँ? DML. So I am running a DML query now. Instead of a DDL, it's a DML, data manipulation language, where I'll insert into this EMP values, say employee ID 1 with name, which is a string, so it goes in double quotes. Say Sam, having say salary as say something 10 lakh, 20 lakh, whatever. His department is say accounts. Okay, so so now let me run this query. Yeah, you can use single quote, double quote, whatever you want. It's still failing because it's trying to look at the Scala thing, right? Can anyone tell me what should I do to run this query?
Can anyone tell me how can I resolve this error? It's looking, see, no class definition found, and it's related to Scala, means it's trying to run Spark. But Spark is not supported by this free system, right? So let me change it to MapReduce. Very good, Nitika, Gomini, very good. Okay. So it's done. I'm pinging you the queries simultaneously. So now we have to run another DML query, which is like select star from EMP. Okay. Semicolon is mandatory at the end of a SQL query. So we are doing SQL, and this is another DML. But some people don't say this as DML, they say this as DQL, because you are querying the data. So data query language, or some people say is that data retrieval language, because you are trying to retrieve the data. But I keep it simple. I'll say all these are DMLs, whether it's like you say DQL or DRL. Select star from EMP. So you are trying to select the data. So you get the data here, right? Now let's say you want to do some analysis on top of this. So what I want to do now is I want to increase this person's salary. Okay. Or even leave that. I want to see his department, for example. I want to see which department this person belongs to. So you can say, okay, select department from this, which is like good, which is accounts department. But you want to see this name in the uppercase. So you want to convert it, right? So see all UDFs. Now, whenever you want to do analysis, you need to use UDFs, user defined functions. very important. Like cast, जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, वो भी एक फंक्शन है. तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, हम इनकी बात करेंगे. तो अगर आपको अपर फंक्शन यूज करना है तो वो क्या करेगा? If you see guys the difference, so the first one I'm saying upper, so accounts, lower, which is this, and this is original value. So now you are doing the data analysis where you are using the functions. So if you talk about, so if you talk about upper and lower here guys, upper and lower are your UDF, user defined functions, which are already available in Hive. Sir, how can we see all these functions? Yeah, Like I'll in tell Python, we used shift and tab. I'll tell you. But if you want to see the detail of any of these, it is available here. Okay. This lower function takes a single argument, which is of the type string value. Okay.
But if you want to see all the functions, there are multiple ways of doing it, but the simplest is, you see this x square here, click on this x square, you will see all the different functions in Hive. And ये अपने आप में पूरी एक महाभारत है. आप अगर ये सारे फंक्शन सीखने बैठोगे तो भी आपको एक हफ्ता लग जाएगा. Because even if you talk about general functions, there are so many general functions. If you talk about aggregate, like min, max, group by functions, you have average, max, min, percentile. You want to do analytics, you have rank, row number, lead, lag, cumulative distance. Okay. You want to do something over collections, collection as we talked about, list and all, or array. So you will see, or map, dictionary. So you, ये kv जो दिख रहे हैं क्या, key value. Okay. You have complex work to do. You have date functions to see the dates, months. You want to do mathematical calculations like cos, sine, ceiling function, floor functions, log base 2. These are for machine learning, mostly you use these, right? You have data masking functions, as in you want to say secure some data. Means say there is a value 1, but you don't want to store 1 as 1 because this is very sensitive. So you will somehow mask it or change it. For example, if you have credit card number which is like 111111234, now your credit card number is so secure, you don't want to store it in the database like this or show it to anyone like that. So what you will do, you will mask it. Masking means आप इन वैल्यूज को छुपा दोगे. तो कभी भी किसी को अगर आपकी कार्ड की डिटेल दिखेंगी तो उसको सिर्फ दिखेगा 111XXX. जब भी आप वेबसाइट्स कहीं एक्सेस करते हो बहुत सारी, वो आपको दिखाते हैं कि भैया आपका क्रेडिट कार्ड का ये नंबर है, डू यू वांट मी टू सेंड दी ओटीपी. तो उसमें वो क्रेडिट कार्ड के आपको शुरू के कुछ डिजिट दिखाता है और बाकियों में क्रॉस दिखा देता है. वो मास्क करके दिखाता है आपका डेटा, सो दैट की पूरी इंफॉर्मेशन किसी को रिवील ना हो. तो ये डेटा मास्किंग है. There are a lot of other stuff we can do, but that's what I'm saying. This is itself is a very big thing. X square and all you can look at. If you want to learn Hive, you can do that by clicking on these things like DDL, DML, select, joins, lateral view, union, subquery, sampling. There are a lot of things we will talk about. Okay. 1 second. Yeah, Nishtha, tell me. In what? हाँ, तो ये तो सीधी सी बात है ना, आपकी क्वेरी में गड़बड़ है. वो कह रहा है कि 3 ही कॉलम है आपके टेबल में, आप उसमें 4 वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हो. डिस्क्राइब करके देख लो. डिस्क्राइब करो टेबल को. आपने 4 वैल्यू डालने की कोशिश की, उसमें 3 ही वैल्यू अलाउड है. आपका एम्प्लॉय टेबल मेरे एम्प्लॉय टेबल से अलग रहेगा, इसलिए ये एरर आया. जस्ट डिस्क्राइब एम्प्लॉय, उसमें 4 कॉलम है मेरे में, आपके में 3 होंगे. करेक्ट. मेरे में 4 हैं, आपके में 3 कॉलम होंगे. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप ये वाला एक्सेस कर रहे हो. आप डिफॉल्ट डेटाबेस में हो. आप ये वाला एक्सेस कर रहे हो. कभी भी अगर डायरेक्टली किसी डेटाबेस का टेबल एक्सेस करना है, हम यहाँ लिख सकते हैं डिफॉल्ट इज डेटाबेस, उस डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय टेबल. लेकिन अगर आप PGA-07, ये PGA-07 वाले डेटाबेस का एम्प्लॉय टेबल अगर देखना चाहते हैं, आप PGA-07 लिखेंगे और आप एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे. ओके, तो वो आपको बता देगा.
तो आप किसी टेबल को इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो कि पहले आइडियली यही बेस्ट तरीका भी होता है, सही तरीका ही यही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अ टेबल बट इट्स डेटाबेस डॉट टेबल नेम. Okay, so that's it. Anything else? Okay, so now we know DDL, we know DML, टेबल कैसे बनाना है, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करना है. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हम करेंगे वो है कि डेटा एनालिसिस. आपने डेटा इंसर्ट कर दिया, बट अब सिलेक्ट क्वेरीज का ही सारा खेल है. You have to be very efficient in the select queries, because in real world you analyze, okay, say a table contains thousands of columns, you want to do the analysis on 10 columns or 20 columns, so you will use select query, and then you want to do some more stuff, so you can do that. For example, I want to see all those employees who belong to a particular department, say finance department. So I will say select everything, star matlab everything from this table where department is equal to what? Say accounts. Let's say accounts. Oh my god. Let's say accounts. And run it. So you get only those records where department is accounts. Okay. So let me insert some more records in this. Okay. So now guys, if you look at, I want to select the records, all the records where department is accounts, right? But I am getting only one record. But in real world, there are two records. There were two records. Can anyone tell me why I didn't get both the records? My table contained two values for accounts, but while I'm fetching all the account details, I'm only getting one. Why? Case mismatch. Very good. So now what I need to do, I need to resolve this. Because here I cannot keep writing all the possible combinations, because someone may write a mixed case also. So I cannot keep writing all the possibilities of different combinations of capital and small. So what I should do is, on the right hand side, I'll put one value, which is either small or capital, whatever. Everything is small or capital. Very good, Gomini. But on the left hand side, I will convert all the values which are in the department column of this table to lower, and then fetch the data.
So from left hand side now, all the department values will get casted into the lower value, and then I get the output. So even if this is a mixed case, I am getting this as output because I've handled it. Okay, guys. So you can do this. So we have seen that, okay, we have created a table, we have multiple records inside it. Now it's all about the data analysis. Selecting the data, using the query, using the UDFs, when to use which UDF, how to use it, what is the like this is way of referencing a table with the database name, right? So that's how it works. Okay. Any questions, anyone? Perfect. Now what I want to do, let me insert some more data to create more scenarios here. ये 2 हाइफन से आप कमेंट कर सकते हो अपने कोड्स. Okay. So for me, no query is running. वो बस executing आ रहा है, वो running ही हो रहा है. नहीं मतलब it may be because of some connection issues or something with the hue. You can try it later. That happens sometimes. Okay. Okay. So now what happens, guys, if you look at what I'm doing. So now I have certain data available. But what I want to see is there any duplicacy on the employee ID? Means I want to see, is there any duplicate employee ID available in my table? Can anyone think about it and give me the solution? Because when you go in interviews, okay, it's 99% sure that you will get SQL questions. Even if you go for a data scientist role, SQL questions are mandatory and they will give you scenario in real time and ask you to solve it. So guys, this is the problem statement. So the first problem was different values of accounts with different value settings, how to resolve it using this lower wala part. Now the second problem is how to see the duplicates on a particular column. There are ways to check duplicates on the complete row, जहाँ पूरी की पूरी रो ही डुप्लीकेट है, बट हमारे केस में सिर्फ आईडी डुप्लीकेट है. तो मुझे ये पता लगाना है वो कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जहाँ डुप्लीकेसी है. मतलब मैं क्या यूज करूं, मुझे एग्जैक्ट क्वेरी मत बताओ, कोई ऐसा कीवर्ड, फंक्शन, क्लॉज जो हम यूज करते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. Did you guys heard about group by? Yes or no? Group by. Very good. So we will use group by. What we will do? We will group this data by the employee ID. Yeah, Aditi, correct. But that is achieved via group by. So you have to group by on the employee ID. So let's see that.
So what I'm going to do, select star from this group by ID, मतलब employee.id मतलब employee table का ID column या सीधा सीधा ID column एक ही बात है. So select star from this group by ID. So now what I'm saying, I'm grouping by the ID column, but what do you want to group? I'm saying, okay, create groups. So this will be one group and this will be second group. So there are two groups that gets created now. So whenever you say group by, so it create groups, group 1, group 2, two groups are created. Now it's very simple. In whichever group the number of records are greater than 1, that's what is duplicate. If you had another group, say employee ID 33, उसके आपके पास उसके भी 2 रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, तो वो एक अलग ग्रुप है. करेक्ट. तो ये सिंपल सी प्रक्रिया है. तो अब हमने ग्रुप्स तो बना लिए, लेकिन ग्रुपिंग करने के बाद ये स्टार काम करना बंद कर देता है. यहां पर होना चाहिए एग्रीगेट फंक्शन. यहां पर होना चाहिए एग्रीगेट फंक्शन. सो व्हाट हैपेंड, सेमीकोलन मिस कर दिया था मैंने, इसलिए वो EOF एरर जो आती है एंड ऑफ फाइल मतलब कि आपकी जो भी क्वेरी है उसके एंड में सेमीकोलन चाहिए, इसलिए एंड ऑफ फाइल ऐसा आ जाता है. So now why it's taking so much time is because when you do group by, one second, what happened? Okay, I'll resolve that. So whenever you do group by, it starts to generate complex MapReduce programs, Java programs. Why it's not running? So I'm doing group by on this, and then I'm simply checking count star. So this count star will give me the value of like the number of records in each group. So better I'll print the group number also along with that. So what happening, guys, is it's creating a MapReduce job and it's running it. Explain it. Get shareable link format, clear, check compatibility settings. It's running that. अब यही है, अब ये से पीछे MapReduce स्टार्ट कर दिया है, तो ये टाइम लेगा उसको कंप्लीट करने में. But this is what the query is. Why the statement is cancelling? So it's running the MapReduce and it's failing. Here you can see HiveQL is failing, failed, error.
So it's trying to run some map reduce job. Okay, it's running the SQL query. So it's trying to run map reduce via SQL. Then it's doing some concurrency, मतलब पैरेलल में बहुत सारे मैपर्स स्टार्ट कर रहा है ये. जब मैपर सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद रिड्यूसर फेज स्टार्ट करेगा. तो अभी तो वो मैपर फेज में ही है और सारे मैपर पैरेलल में चलते हैं, तो वहां पर वो उसको हम कंकरेंसी कहते हैं. कंकरेंट का मतलब होता है जब कोई भी काम पैरेलल में एक साथ हो रहा हो. तो मैप फेज में मल्टीपल मैपर सब एक साथ चलते हैं. जब सारे मैपर कंप्लीट हो जाते हैं तो रिड्यूस फेज स्टार्ट होता है, उसमें सारे रिड्यूसर एक साथ चलते हैं. तो ये मैपर का एक साथ चलना या जो होता है उसको कंकरेंसी कहते हैं, या रिड्यूसर्स का एक साथ जब वो शुरू होते हैं तो उसको कंकरेंसी कहते हैं. तो आई थिंक ये मुझे उतने रिसोर्सेज नहीं दे पा रहा है, बिकॉज अगेन इट्स अ फ्री का मशीन, बट अगेन व्हेन वी डू इट ऑन आवर ओन VMs it will be fine. So when I will show you it on my VM machine it will run, but logically, conceptually and concept wise you should be able to understand what I'm trying to explain here. So this is the actual query that should be executed. So guys, now so far anyone any questions? आपको ग्रुप बाय समझ आया? और ग्रुप बाय के बाद फिर हम काउंट निकालेंगे, जहां जहां काउंट ग्रेटर देन 1 आएगा वो हमारा एक्चुअल आउटपुट रहेगा. So guys, we will take a break and we will resume at 11:40, somewhere around 11:35 to 11:40. So please be back by then, or you can read about group by more till that time. What is a group by, how it works, what are different UDFs, you can explore that in the Hue. You can what you can do is on this right hand side, just look at the functions, just look at the group of functions and read about it. That will help you. Or if you want to study, you have the entire manual here, like what is the DDLs, what are managed and external tables, right? If you look at, so here you have this managed versus external table wala funda. So you can read all this stuff. Managed table is nothing but the internal table, and then you have external table. Queries, scheduled queries, exchange partition. So we will talk about these things later. We'll take a break. Okay guys, please be back by 11:40.
बना
Hi guys, please ping me if I'm audible and you guys are back. Okay. So let's talk about something now specific to Hive again. तो आप लोगों को क्या करना है, देखो, have a picture in your mind. What that picture says is, whenever you are creating a database, that means सेम नाम का HDFS में एक फोल्डर बन जाएगा. ये आपका हाइव है, ओके, और ये आपका HDFS है, फॉर एग्जाम्पल. So this is Hive, this is HDFS. Whenever you create, you have created this as a database. So if you create a database here, so you will get a folder here. Within that database, if you create a table, say first table, so that means within this folder, there will be a subfolder for that table. Then within this database, you create another table. So that means in this HDFS folder, there will be another subfolder, right? So this is the folder for table 1, this is the folder for table 2, but this parent folder is actually what? This is the database level folder. So within a database, which is a folder, there will be subfolders, which are nothing but your tables. Okay? ये जो रिलेशन है आपको क्लियर होना चाहिए. Okay. Now, after this, we talked about that कि ठीक है, मैंने टेबल बना लिया, उसमें डेटा भी डाल दिया, उसको क्वेरी कर लिया, मेरा एनालिसिस जो भी मुझे करना है, that's it, that's done. Now, हाइव में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट. तो अगर ये आपकी एक टेबल है, तो टेबल कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, वो तो हमें अभी क्लियर है. कब इंटरनल के एक्सटर्नल बनानी है वो भी क्लियर है, बट हम उस पर और डिस्कशन करेंगे. बट नाउ सेकेंड पॉइंट इज कि अगर आपने एक टेबल बनाई, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सर्डे. व्हाट आर सर्डेज? सो बिफोर आई गो इनटू सर्डे, एनीवन नो व्हाट इज अ सर्डे? किसी ने पढ़ा है? चाहे आपकी इंटरनल टेबल हो या एक्सटर्नल टेबल हो, किसी भी तरह की टेबल हो, बात है सर्डे क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट. एनीवन कोई गेस मारना चाहेगा, सोच रहा है? फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? एटलीस्ट कल मैंने बताई थी. सीरियलाइजर एंड डी सीरियलाइजर. या नितिका, अदिति, या थैंक्स. तो देखो गाइस, या प्रगिशा, थैंक यू. सो जब भी आप, मैंने बोला था कि ये अगर मेरा टेबल है, राइट, तो इस टेबल के अंदर आप डेटा इंसर्ट जो कर रहे हो, या जो भी रोज हैं इस टेबल के अंदर, वो अल्टीमेटली HDFS में क्या होंगी? फाइल्स की फॉर्म में स्टोर्ड होंगी, राइट. टेबल में जितनी भी रोज हैं वो HDFS पे एक फोल्डर के अंदर फाइल्स के रूप में मौजूद होंगी. तो अगर ये आपका टेबल है, तो इस टेबल का जो भी फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स होंगी. कुछ रोज इस फाइल में होंगे, कुछ रोज इस फाइल में होंगे, तो देयर कैन बी मल्टीपल फाइल्स, राइट. Now the question is, what should be the format of this file? Whether this file should be a JSON file, means you want to store data in JSON format. You say no, I want to store it in CSV format, which is by default. You say no, save it in XML. You say whichever format. That means for any table, the underlying files are in which format? That is controlled by सर्डे. हाइव में 90% यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो 10% वो एसक्यूएल ही है. एसक्यूएल अगर छोड़ दें तो 90% जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सर्डे है. कई बार होता क्या है कि आपको
एक फाइल दे दी जाती है। मान लो मैंने कहा यार ये जेसन फाइल है, जरा इस जेसन फाइल को हाइव के टेबल में लोड कर दो। आप सोचोगे यार ये कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइव में आप डायरेक्टली फाइल तो डाल ही नहीं सकते। फाइल कहां डालोगे, यहां पे। मैंने, देखो आपने क्या किया, आपने एक टेबल बनाया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एचडीएफएस पे आपको एक फोल्डर मिल गया। अब मैं बोलता हूं कि यार ये जेसन फाइल है, मान लो इसमें 1 लाख रिकॉर्ड है, ये इस टेबल में लोड करनी है। तो आप क्या करोगे, कहोगे अरे कोई बात नहीं यार, ये तो बहुत ही आसान है, इस फाइल को उठा के एचडीएफएस में डाल दोगे, बस अपनी एचडीएफएस डीएफएस हाइफन पुट वाली कमांड से। जब ये फाइल आप यहाँ पे मैनुअली डाल दोगे तो हाइव अपने आप को थोड़ी थोड़ी देर में रिफ्रेश करता रहता है कि अगर किसी ने पीछे से जाकर फाइल वाइल डिलीट की है या डाली है तो उसका डेटा हाइव में यहाँ पे क्वेरी करते समय रिफ्लेक्ट हो, मुझे दिखे, वो अपने आप को रिफ्रेश करता रहता है। गेटिंग इट? कि आखिर ये कितना इंपॉर्टेंट है आपका एचडीएफएस लोकेशन का पता होना, क्योंकि आप कभी भी कोई फाइल डायरेक्टली लोड नहीं कर सकते। लोड आप, मतलब अगर इस टेबल में डेटा डालना है तो नॉर्मली आप क्या करते हो, इंसर्ट क्वेरी चलाते हो, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने चलाई थी, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम, एंड देन आप एक एक करके वैल्यू डालते हो। अब मान लो आपको 1 मिलियन रोज इसमें डालनी है, तो आप इंसर्ट क्वेरी से तो नहीं डालोगे ना 1 मिलियन। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक ये है कि हम इस फाइल को सीधा सीधा उठा के एचडीएफएस की लोकेशन पे डाल देंगे और हाइव का टेबल जो उससे लिंक्ड है वो उस डेटा को रीड कर लेगा। बट प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम यहां आएगी कि आपका जो डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट जो हाइव समझता है वो होता है सीएसवी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू में पूछते हैं। डिफॉल्ट हाइव का जो फॉर्मेट है वो है सीएसवी। फाइल डाल दिया आपने जेसन, मान लो यहाँ पे 2 सीएसवी फाइल पड़ी थी, तीसरी फाइल आपने डाल दी यहाँ जेसन। तो भाई कोई जादू थोड़ा ही है कि हाइव जेसन को भी समझ लेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई टेबल सीएसवी को समझता है तो यहां पर हमें सीएसवी फाइल्स ही डालनी पड़ेंगी। जेसन अगर हम डालेंगे तो क्या होगा कि वो उनको इग्नोर कर देगा, फेल नहीं होगा। सीएसवी फाइल्स का डेटा तो आपको दिखा देगा सिलेक्ट स्टेटमेंट में, बट इनका नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि राहुल मुझे तो जेसन फाइल ही मिली है, मान लो यहाँ पर आपके पास कोई सीएसवी फाइल्स नहीं है, मिक्स फॉर्मेट नहीं हो सकता, हाँ, या तो सब कुछ सीएसवी होगा या सब कुछ जेसन होगा। आप कहते हो राहुल मेरी फाइल्स तो जो जो यहाँ से आ रही हैं वो जेसन है, तो आपने हाइव का टेबल जो बनाया वो गलती से आपने सीएसवी बना दिया, तो अब क्या करें। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी टेबल के सरडे को देखते हैं कि भैया बाय डिफॉल्ट इट्स अ सीएसवी सरडे, we can alter the table and change the survey to JSON, बट एक बार में वो या तो सीएसवी होगा या जेसन होगा। मतलब यहां पर एक ही तरह की फाइल्स होनी चाहिए सारी, या तो सीएसवी या जेसन या एक्सएमएल या वटेवर, वो मिक्स फॉर्मेट्स को नहीं समझेगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको सीएसवी चाहिए तो आपको कुछ करना ही नहीं, डिफॉल्ट फॉर्मेट है। लेकिन अगर आपको जेसन या एक्सएमएल करना है तो आपको सरडे चेंज करना पड़ेगा। तो अब हमारी जो क्रिएट स्टेटमेंट थी वो बदल जाएगी, अभी हम बनाएंगे। बट सो फार एनी क्वेश्चन इन दिस? Guys, any question? Yes, no? It's good to Sir, ask questions, definitely. Yes. sir, day before yesterday, you created the CSV file or table, I guess. Okay. नहीं, sorry, CSV file in external table or managed table. But sir, delete करने के Yeah. बाद तो चल नहीं रही थी default if CSV है तो। डिलीट करने के बाद क्या नहीं चल रहा था?
क्वेरीज नहीं रन हो रही थी ना, आपने कहा कि हाइव रीड करता है CSV को, इट्स अ डिफॉल्ट फॉर्मेट। करेक्ट इफ करेक्ट HTML कंटेन CSV फाइल, तो जो हमारा हाइव है वो रीड करेगा CSV फाइल को। बट सर बिल्कुल। हम जो रन कर रहे थे फिर उसमें तो एरर आ रहा था, वो टेबल में तो रीड नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, आप ह्यू की बात कर रहे हो या कहाँ पर चेक किया था ये आपने? सर आपने करवाया था ना ह्यू में। नहीं, मगर आई थिंक ये दो अनरिलेटेड चीजों की बात हो रही है। मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ आपका क्वेश्चन अच्छे से, मुझे अभी भी नहीं क्लियर हुआ है। सर हमने टेबल्स बनाई थी इंटरनल और एक्सटर्नल वाली, तो फिर जब बिल्कुल डिलीट बनाई की थी। तो वो जो HDFS वाला पाथ था उसमें वो फोल्डर था हाँ, एक्सटर्नल टेबल वाला। बिल्कुल बट सर जब हम सही क्वेरी बात रन है। कर रहे थे तो एरर आ रहा था। हाँ, तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है ना। इन दोनों कॉन्सेप्ट में कोई आपस में कोरिलेशन नहीं है। वो तो सर इंटरनल तो एक्सटर्नल टेबल उस का चीज कॉन्सेप्ट का है ना। क्या मीनिंग है कि हाइव रीड करता है CSV फॉर्मेट? ओके, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपने कोई टेबल बनाई तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एचडीएफएस पे एक पाथ बनता है, राइट? राइट। इतना क्लियर है? हम्म। अब उस पाथ पे अब आपने मान लो इस टेबल में इंसर्ट क्वेरी कर करके मल्टीपल रोज इंसर्ट कर दी इस टेबल के अंदर, ठीक है? यस। तो वो एचडीएफएस में आपको कैसे दिखेगी? आपको फाइल के रूप में ही तो दिखेंगी ना। और वो फाइल जो होंगी वो सीएसवी फॉर्मेट में होंगी बाय डिफॉल्ट। ओके। मतलब सीएसवी भी नहीं होता है वो, वैसे तो होता तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट, बट कॉमा सेपरेटेड नहीं होता वो टैब सेपरेटेड होता है। उसकी बात मैं अभी करूंगा। बट अल्टीमेटली आप ऐसा समझो कि वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल होती है। जैसे सीएसवी भी टेक्स्ट फॉर्मेट होता है ना, तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट है, सेपरेटेड बाय टैब, नॉट कॉमा। तो सीएसवी की जगह वो एक्चुअली टीएसवी फाइल्स होती है। हम वो सब ओके। कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कॉमा सेपरेटेड फाइल चाहिए। तो मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि अगर किसी टेबल में कोई डेटा है और आप उसे सिलेक्ट क्वेरी से नहीं देखना चाहते, आप डायरेक्टली एचडीएफएस में लिनक्स के कमांड के थ्रू उसको देखोगे, तो वो लिनक्स के कमांड से हम उसको देख सकते हैं और वो आपको सीएसवी या जेसन के फॉर्मेट में दिखेगा। बस इतना बात है कि टेबल का डेटा एचडीएफएस पे किस रूप में प्रेजेंट होता है। अब हम एक्सटर्नल टेबल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ कि वो डिलीट होता है नहीं होता, वो तो कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ कॉन्सेप्ट है कि एक्सटर्नल टेबल इंटरनल टेबल कोई भी हो, उसका डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है। नहीं सर, आई मीन टू आस्क कि जितने भी फाइल फॉर्मेट्स हैं जेसन, XML, CSV, अगर हम HDFS में स्टोर करते हैं तो वो टेबल में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर वो डिफॉल्ट फॉर्मेट है तो? नहीं होता ना, नहीं होता। दैट्स अ पॉइंट कि अगर आपका टेबल डिफॉल्ट फॉर्मेट का है तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स ही समझेगा, वो जेसन या एक्सएमएल नहीं समझेगा। अगर आपको टेबल को जेसन या एक्सएमएल फाइल समझ आनी है या देनी है, तो हमें टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा, जो अभी हम करेंगे। ओके सर। समझ रहे हो? बाय डिफॉल्ट हाइव डज नॉट अंडरस्टैंड जेसन एंड एक्सएमएल। नो, you have to make it understand that. But your question is absolutely valid. ठीक है? But अभी और उसमें कुछ you want to ask? Let's see that and then you can ask again. ठीक है? Okay. So now let's come back here. कल हमने बात की थी किसकी? डिस्क्राइब formatted the table. Okay. So now when you're describe formatting the table, that table will have two important things. Okay. One is whether it's an internal or external table, but second is on HDFS, where is that file stored. So this is the folder for the table, and if you see, this is the database folder, PGA-07.db. so this means this is the database जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, उसके अंदर आपका एक टेबल बना हुआ है।
but अब default survey serializer deserializer is lazy simple survey, which is nothing but a text based survey. So every survey has an input format and an output format. So ultimately it's the text format that it's understanding. It's not a JSON or XML. Okay. Now, if you want, let's create a new table. Create table emp underscore JSON, just to keep its name simple. Create table this. Give the schema, the ID integer, salary float, and you will say there are these clauses stored as like JSON file. So it's creating it. It's perfectly fine. This error is not a problem. I'll explain you. ये fail हो गया, but there is a reason behind it. Stored as, first of all, that's important. You are creating a table, but how you want the data to be stored in HDFS? इस टेबल का डेटा HDFS में कैसे स्टोर होगा? तो I want to store it as a JSON file. If you want, you can see by text file, which is by default. Okay. There is JSON. Okay. There is XML, which is not coming here. But there are some other advanced formats like Avro. Okay. Avro. Parquet. Okay. So there are various formats. We will talk about it in a while. So you can store your data in different formats, and these different formats, इनका अलग अलग फायदा होता है. कोई कंप्रेस्ड फॉर्मेट्स हैं जो कि 10 GB की फाइल को 1 GB में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं, तो आपका स्टोरेज स्पेस बचा लेते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रोसेसिंग में बड़े फास्ट हैं, कि अगर आपको डेटा एक्सेस करना है तो मान लो एवरो में अगर 1 घंटा लग रहा है तो पार्क्वेट में आधे घंटे में वो काम हो जाएगा. तो जो फाइल फॉर्मेट्स हैं ये सर्डेज, यही सोल है आपके हाइव का. बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है. तो देयर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स. इफ यू लुक एट एवरो, ORC, Parquet, RC, sequence files, text files. So these are the formats. Okay, let me try some other. Let me try Parquet. Stored as Parquet. अच्छा, ये एरर क्यों आई है? क्योंकि जेसन से के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो इस डिफॉल्ट फ्री सर्वर में नहीं है, तो हम इसको अपने मशीन पे भी ट्राई करेंगे, या आप लोग भी ट्राई कर सकते हो जिनके मशीन चल रहे हो. So let me try a different format. Instead of JSON, I will try Parquet or Avro. So this time I'm creating a table and see it's created. Okay, but I should change it. Say, मतलब ये नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं बस ऐसे ही रख रहा हूँ. ये नाम कुछ भी रख सकते हो आप. So on the left hand side you can see
there are this table is created, employee Parquet. You can ignore these. These are temp tables, some temporary tables that gets created. वो थोड़ी देर में खुद ही डिलीट हो जाएंगी. जो इंसर्ट क्वेरीज हमने चलाई थी उसकी वजह से बनती है, तो यू कैन इग्नोर दिस. Okay, so what we have done, guys, is let me ping you first. So we are understanding the SERDs, and there are multiple SERDs like default, which is text file. Then you can have other than that CSV. Okay, other than that you can have JSON, you can have XML, you can have Avro, Parquet, and so on. So we created a Parquet table. So sometimes when you work in a project, they will say create a Parquet table. तुम क्या हो यार ये क्या होता है? अरे भाई टेबल ही है, बट उसको Parquet फॉर्मेट में स्टोर करना है जिससे कि उसकी एफिशिएंट प्रोसेसिंग हो सके. अब वो क्या है, क्यों है, we will talk about that. So now let's do one thing. Let's describe this. Describe formatted. So let's see that. Yes, Aditi, correct. मतलब देखो गाइज, अब क्वेश्चन ये आता है, कई कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अब इतने सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं, इतने मतलब सर्डेज हैं, मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा यूज करना है. तो कोई टेंशन नहीं है. होता ये है कि इसके पीछे दो मेन कारण है इस चीज को डिसाइड करने के. पहला कि ये जो भी टेबल है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एचडीएफएस का अगर ये एक फोल्डर है, राइट, एज अ एनालिस्ट यू विल ऑलवेज एक्सेस द डेटा. अगर मैं आप लोगों की बात करूं, एज एन एनालिस्ट यू विल ऑलवेज एक्सेस दिस डेटा यूजिंग सिलेक्ट क्वेरीज. ओके, but there will be someone else who is putting the data here. Now the question is that someone, that person in your company, if he is saying कि भैया देखो मैं तो हमेशा पार्क्वेट ही फाइल दूंगा, अब आगे क्या करना है तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे उससे मतलब नहीं है, तो इसने तो बोल दिया ये लो भैया पार्क्वेट फाइल. अब तुम कहते हो यार मैं तो सिर्फ, मेरा हाइव तो पार्क्वेट समझता ही नहीं है, वो तो तुम फंस गए. तो एक तो ये हो गया कि जो आपका डेटा जनरेटर है वो जिस फॉर्मेट में आपकी फाइल जनरेट कर रहा है, आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो टेबल है उसका जो स्टोरेज फॉर्मेट है वो उससे कंपैटिबल हो. तभी तो ये फाइल जब यहां रखी जाएंगी और जब इसके ऊपर आप सिलेक्ट क्वेरी चलाओगे तो आपको ये डेटा सही से दिखेगा, वरना वो नल 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 दिखेगा या दिखेगा ही नहीं. ये वाला पॉइंट है पहला. तो दिस इज द सिनेरियो नंबर 1. नाउ देयर इज सेकंड सिनेरियो where मतलब how to decide the file format. Again this is your table which is having an underlying HDFS folder, and now here you have multiple files of the format Parquet, definitely because table is Parquet format, so the files are also Parquet format. But what is the reason for creating Parquet is, now the reason is you, the analyst, this person, okay, the analyst, when he want to run queries, his queries are of some particular type, and those queries runs faster on Parquet as compared to CSV. Okay, so the analyst decides that when the table is created, it should be of the type Parquet because my queries are best compatible or best optimized
when run on Parquet data instead of CSV data. Okay, अब वो कौन सी क्वेरी होती है या पार्केट या सीएसवी में क्या फर्क है वो मैं बताऊंगा, बट पहले कारण क्या है वो समझो। तो ये हो गया सिनेरियो नंबर 2। तो कभी भी टेबल बनाते समय उसका फॉर्मेट डिसाइड करने के पीछे दो ही कारण होते हैं। एक तो ये कि अगर आपका जो डेटा जनरेटर है वो कहता है कि भैया मैं तो इसी फॉर्मेट में फाइल दूंगा, तो आप देख लो। और दूसरा कि जो आपका एनालिस्ट है वो कहता है भैया मैं तो इसी तरह की क्वेरी चलाऊंगा, और ये क्वेरी सीएसवी में 1 घंटा ले रही है, पार्केट में 30 मिनट ले रही है। तो फिर ये जो बेचारा यहाँ पे बैठा हुआ है बिग डेटा वाला बंदा, तो वो डिसाइड करेगा कि ठीक है भाई मैं पार्केट बनाता हूँ। तो ये जो बिग डेटा वाला बंदा है या तो वो सोर्स वाले बंदे से बात करेगा टू डिसाइड द फॉर्मेट, या फिर वो डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट से बात करेगा कि भाई तेरी क्वेरी कैसी है। वो दोनों आपस में बात करेंगे कि यार देखो हमारे नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो एसक्यूएल क्वेरीज आने वाली हैं इस टेबल के ऊपर वो ज्यादा अच्छी रहेंगी अगर हम पार्केट फॉर्मेट में रखें डेटा इंस्टेड ऑफ सीएसवी। तो जो बिग डेटा इंजीनियर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया फाइल का फॉर्मेट क्या रखना चाहिए। A, he will talk to the source team, and B, he will talk to the analyst who is actually going to run the queries on it. He is just a facilitator. Guys, are you comfortable with this explanation? Any question? And this is really very, very important, because in real world, deciding which survey to use when is actually the bread and butter for a big data engineer, or rather a Hive engineer. बिग डेटा वाले के लिए तो बहुत कुछ काम है, अभी स्पार्क भी है और नो सीक्वल भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादातर हाइव पे ही काम करते हैं। Yes, Vipul, it's a read write problem. It's a solution for the read write problem. Some surveys are faster when you read the data. Some surveys are faster when you write the data, or they compress the data and store it to save the space. So you have actually put it the crux. It's the read and write. That are the two things which are being handled by surveys. Gulzar is saying, sir, which is that format you told alternative to CSV. TSV, it's a tab separated. CSV is comma separated values. TSV is tab separated values. So these are, yeah, TSV. So when the separator between the values is tab instead of comma. Okay. So when I describe it, let's see what happened. Guys, the survey library, the Hive is written in Java, right? So the Hive driver, the Java driver, actually uses this Java class Parquet Hive survey for survey, and the input output format are dependent on the survey. So since it's Parquet, so it's Parquet input format, Parquet output format. Input output format is nothing but if it's like this is the table, you are sending data in a format and then it's storing it in a format. So that means कि आप उसको डेटा जो भेज रहे हो वो किस फॉर्मेट में है, ओके, और जब आप उसे रीड करते हो तो वो किस फॉर्मेट में है, या जब उससे बाहर निकलता है डेटा, उसके अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, सब पार्क्वेट फॉर्मेट में ही रहेगा डेटा, ठीक है। व्हेन यू रीड राइट द डेटा, इट्स द इनपुट फॉर्मेट एंड द आउटपुट फॉर्मेट, और यू कैन से किस तरह की फाइल्स भेजी जा रही हैं यहाँ पर प्रोसेस करने के लिए।
या सेव करने के लिए, और किस तरह की फाइल ये बाहर जनरेट करके आपको HDFS पे डाल के दे रहा है, वो आउटपुट फॉर्मेट है। कंप्रेशन बाय डिफॉल्ट नो है, we can compress it also, but for parquet file you don't really need to do separate compression because it's internally compressed. There are multiple compression formats. We will talk about compression formats also. Okay, so now let's see this, guys. I normally divide surveys in 3 categories. First are text based surveys. Second are binary surveys, and third are columnar surveys. So when someone asks you in an interview, what are different kinds of surveys, you should tell them that there are 3 kinds of surveys: text based, binary and columnar. टेक्स्ट बेस्ड सर्वे वो होते हैं, मतलब कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फाइल्स होंगी जो भी HDFS में, उनका डेटा आप जब खोलोगे तो वो रीडेबल होगा, यू कैन अंडरस्टैंड कि भैया डेटा क्या है. बट बाइनरी इज द डेटा इज इन द कंप्रेस्ड फॉर्मेट. व्हेन यू ओपन द फाइल यू विल सी सम गार्बेज, you cannot read the files. Files are secured in a way no one can read it. If you have to read the files, you can only read it through SQL. You cannot read it directly using the Linux की cat command वगैरह. Getting it? जबकि टेक्स्ट बेस्ड सर्वेज में अगर आप HDFS पाथ पे जाओगे तो वहां जो भी फाइल पड़ी है उनको आप कैट करके ओपन जब करोगे लिनक्स से तो आप उनको रीड कर पाते हो, और आप SQL से तो हाइव के थ्रू उनको रीड कर ही सकते हो. लेकिन बाइनरी वाली जो फाइल्स होती हैं उन्हें जब आप कैट कमांड से ओपन करोगे तो वो बड़ा ही गार्बेजिस डेटा होगा, वो आपको समझ ही नहीं आएगा एक्चुअल वैल्यू क्या है. इट्स बिकॉज इट्स हाईली कंप्रेस्ड, and when you compress the data you change the format, storage values. So only way to access it is SQL or SQL. Columnar surveys are the ones which store the data in columnar format. Normally tables are stored in the row format, like row 1, row 2, row 3, but they store the data in the columnar format. Like if you have 4 columns or features: name, age, salary and gender. So columnar surveys will store all the values for a particular column together, all the values for this together, all the values for this column together, all the values for this column together. But in the row format, if this is the data, one file will contain few records, another file will contain few records, like this. This is row format. But columnars, this is columnar format. Okay. अब दोनों का अलग अलग फायदा है और नुकसान है. रो फॉर्मेट में स्टोर करने के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है. इसके भी कुछ फायदे नुकसान है, हम उसकी बात करेंगे आगे. बट पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो डेटा होता है वो रो फॉर्मेट में स्टोर होता है, कि एक फाइल में अंदर पहली कुछ रोज चली गई, अगली फाइल में कुछ रोज चली गई, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. कॉलमर फॉर्मेट में क्या होता है कि एक कॉलम का डेटा एक फाइल में, एक कॉलम का दूसरी में. तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको पॉइंटर्स या लिंकेजेस बना के रखनी पड़ती हैं फाइल्स के बीच में, क्योंकि अगर किसी को सारे कॉलम का डेटा चाहिए तो पता तो होना चाहिए ना, लिंकेज होनी चाहिए सारी फाइल्स. यहाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक रो का सारे कॉलम एक साथ स्टोर्ड है. तो इतना समझ आया कि भैया टेक्स्ट बेस्ड क्या है, बाइनरी क्या है और कॉलमनर क्या है, before we further deep dive into this. Okay, good. So now let's deep dive to the deeper level. What are different text based surveys? So you have TSV, you have CSV, you have JSON, you have XML, all these formats. Because आप JSON फाइल कभी भी खोलते हो तो आप उसको रीड कर सकते हो, राइट? वो है टेक्स्ट फॉर्मेट्स. XML का भी कंटेंट आप रीड कर सकते हो. तो
if someone asks you what are different text surveys available in Hive, TSV, CSV, JSON, XML. And there is one more, which is a simple text file. Guys, one correction. Default separator in Hive is Control A character. It's not tab. Tab is in Scoop or Pig. Okay, I'll tell you that. It's in Pig, I think, but that's the thing. ये बहुत सारी चीजें हैं Hadoop में. तो टेक्स्ट बेस्ड सर्विस में डिफॉल्ट हाइव का जो फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट, वो कंट्रोल ए सेपरेटेड होता है, बट आप टैब सेपरेटेड, कॉमा सेपरेटेड, जेसन, एक्सएमएल कुछ भी रख सकते हो. ठीक है. See, the Hive default file format, Hive text file format is the default storage format. Okay. But in this default file format, what is the default separator? So if you look at in Hive, by default, each fields are delimited by Control A. Control A is a special character. So for example, if you have a row which contains a employee ID, normally you do comma separated, right? Employee ID, comma, say his age, say 30, say his name, sorry, his name, whatever. But in Hive, by default, if you open any file, it is 1, and then a Control A character, some garbage character, 30, then some another garbage character, because Control A is a special character, and then this value. So you will see this is some garbage characters for Control A. So that's how your files will look like. Separators will be some special garbage characters. Instead of comma or spaces or tabs, it is this. Okay. So Control A, it's a special character. I'll show you that when we will open that again, the VMware. तो ये थोड़ा भी यहाँ पे वैसे विजिबल नहीं है उतना. ये वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है. वो कंट्रोल दिखता कैसा है, बट वी कैन सी इट इन आवर HDFS लेटर. Okay. Now, after that, we have binary surveys. Binary surveys means the files are highly compressed and the data is not visible to the naked eyes. As in, you try to open it using Linux commands like cat and all, you cannot make sense of that data. So there are two most important binary formats. One is known as sequential file and another is known as Avro. So sequential file and Avro are the two binary file formats.
So sequence files, one is the sequence file, which is having a particular kind of a format, how it stores the data. Okay, like sync marker, metadata, compression codec, the actual text data, which is the actual data in the key value format. But this is how this data is actually. If you look at my screen, if you open these files in Linux, this is how the data will be. This is the data actually, but it will not make any sense to you. It's a bit of encrypted, and on the left hand side values, these are certain octal values, so that also won't make much sense to you. Okay, but this is how the sequence files are. But when you access them through SQL, तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो सीक्वेंस फाइल हो या एक्सेस जेसन फाइल हो, आपको जो आउटपुट डेटा दिखता है SQL क्वेरी का वो सेम ही दिखता है सब केस में. बट ये इस तरह से तब दिखता है जब आप HDFS में जाके देखते हो, फाइल डायरेक्टली खोलने की कोशिश करते हो. There is another sequence file format, another binary file format, which is Avro, which is also stored in somewhat similar way, where you have a header and then it's split it into certain blocks. So your Avro file is having a header, and then this is the data parts. Okay, and each of this block is further contains so much of data. So, and this is what your header. But when you access this data even through SQL, everything will look, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा पीछे की वो एवरो है या क्या है, तुम्हें तो डेटा ऐसे दिखेगा टेबुलर फॉर्मेट में हमेशा. ओके, देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉलमनर सर्डेज, जो कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होते हैं. विच आर द कॉलमनर सर्डेज? या गुलजार? यस सर, अभी आपने जो टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स जो कहा था एक बार वो फिर बता दो. नहीं एक सेकेंड है, एक सेकेंड. गार्बेज कैरेक्टर मीन्स आर रिडंडेंट. अरे नहीं गुलजार, गार्बेज कैरेक्टर मीन्स रिडंडेंट नहीं. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई नॉर्मल फाइल आप ऐसे जब खोलते हो तो आपको इस तरह से दिखती है, राइट? अगर उसके अंदर मान लो कोई डेटा है तो इस तरह से दिखता है, कॉमा सेपरेटेड फाइल, राइट? अग्री? लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिखेंगे यहाँ पे. वो कुछ गार्बेज कैरेक्टर जैसा होगा अजीब सा. लेट मी शो यू दैट. Does it look like a matrix box? Box. Absolutely. Yeah, it's a 2x2 मतलब small सा matrix box. But if you look at currently, see, whenever I'm pressing an enter, I am getting this CR and LF. These are also special characters, Gulzar. For every enter that you press, you see this special character. I am saying this as garbage because it's a gibberish, something that is not even comprehensible to normal eyes. But it's not garbage. It actually have a meaning. For example, CR is carriage return, LF is line feed. तो बट ये तो एंटर के लिए है, ठीक है? तो जब भी आप एंटर प्रेस करते हो तो पीछे ये कैरेक्टर्स होते हैं, आपको कभी दिखते नहीं है. ये तो मुझे क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मैंने शो सिंबल में जाके शो ऑल कैरेक्टर कर दिया. इसको हटाते ही देखो यहाँ पर है वो कैरेक्टर्स लेकिन गायब है. तो इस तरह से बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं. ओके, तो कंट्रोल ए विल बी सम कैरेक्टर हियर व्हिच इज लाइक दिस. लेट मी शो यू. So when it's a control A, तो यहाँ पर you will see a small box with something written inside it. A small box with something written inside it. उसके अंदर क्या लिखा होता है मतलब वो भी अभी
कुछ मैटर नहीं करता, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये इस तरह से होंगे आपके सेपरेटर्स, इस तरह की फाइल दिखेगी आपको जब आप खोलोगे। सो दे आर हिडन कैरेक्टर्स विच कैन बी डिस्प्लेड ओनली बाय स्पेसिफिक कमांड्स। They are not hidden characters, Gulzar. Means I am saying these are different things. They are not hidden characters. They will be visible to you, but they will be visible like this, gibberish, garbage types. But yes, there are commands using which I can convert this garbage to a proper meaning. I can convert this into this format. 1 0 0 1 2 0 0 1. Because you are interested, I am telling you. 3 0 0 1. I actually don't want to put so many things to your mind. Okay, so Gulzar, when you open this file in HDFS, it will look like this. Means gibberish, garbage characters, but say there are 10 special characters and all of those looks like this. How will you make sense whether it's a control A, control B, control C or control D? So there are some encoding decoding formats. There are some conversion commands using which I can convert this into this format where 1 is the actual value, this 2 is the actual value, this 3 is the actual value, right? 22 is the actual value, 33 is the actual value, and 4 is the actual value, right? But these are special characters. So this is \001 is actually the representation for control A. \001 means control A. \001 \001 001 ये नहीं होगा, सॉरी ये मैंने गलत डाल दिया क्योंकि एंड में यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर भी होगा, अगर यहाँ पर भी होता बॉक्स तो ये एंड में भी आता, वरना नहीं आता। गुलजार अभी क्लियर है? But yeah, definitely it's a good point that you are asking, because if you see this, Gulzar, Hive default separator is control A, right? Its octal value is \001. So I actually have to convert my data from the normal representation to the octal format. This data needs to be represented in the octal format to see the octal values. So there are a lot of these things: ANSI, UTF, UCS, BOM, UDF 8 BOM, 16 BOM. So Notepad++ can be used to do that, or some other commands also. Similarly, there are control B. So if it's \002, that means control B, control C, control D. Okay. Okay. Okay, perfect. So coming back to what was that? So this is done. Then you have these formats. The binary formats are actually highly compressed, highest compression out of these three: text based,
बाइनरी एंड कॉलमर में हाईएस्ट कंप्रेशन इज हियर, means they are best to store the data if you want to save the space. But because since it's compressed, when you read it, it needs to decompress. So that means while reading these kinds of data files, if you want to read them, they will take time because it first decompress and then show you the data. While storing, it will save the space, but while processing, that's an overhead. So there is a trade-off, right? Whether you want to save the storage or you want to do a higher, faster processing. That's where the SerDes helps you. Okay? जहां मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये बंदा जो बेचारा बैठा है बिग डेटा वाला, ये डिसाइड करेगा SerDes ए, सीधा सीधा सबसे आसान तरीका है कि आपको सोर्स टीम ही बोल दे कि भैया हमको तो, हम आपको हमेशा क्या देंगे, पार्कोड फाइल देंगे, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। लेकिन ये वाली मान लो सिनेरियो है ही नहीं। सिनेरियो है कि बिग डेटा वाला बात कर रहा है आपसे, जो कि हो डेटा साइंटिस्ट। वो आप कहते हो इसको कि भाई मेरे को ना बिग डेटा यूज करना है, यहाँ पे ना एक हाइव टेबल बना दे और उसमें डेटा कहीं से भी जो भी आ रहा है वट कहता है ठीक है भाई मैं कर देता हूँ, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपकी जो क्वेरी है उनको किस तरह की क्वेरी है? क्या वो ज्यादातर आप डेटा यहाँ पे राइट करना चाहते हो या आप मोस्टली पहले डेटा रीड करना चाहते हो? तो पहले तो सीधा सीधा उसी के बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा। फिर ये होता है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली उसको रीड करना चाहते हो, वो हॉट डेटा है कि कोल्ड डेटा है। फिर ये होता है कि आपके क्वेरी मोस्टली सारे कॉलम को एक्सेस करना चाहती है या किस पर्टिकुलर कॉलम्स को। अगर सारे कॉलम को एक्सेस करना चाहती है तो हम रो स्टोरेज लेंगे, अगर स्पेसिफिक को तो हम कॉलम स्टोरेज लेंगे, क्योंकि अगर स्पेसिफिक कॉलम को एक्सेस करना है तो हम बाकी कॉलम को क्यों रीड करें, तो हम कॉलमर स्टोरेज पे जाएंगे। तो ये बहुत लंबी डिस्कशन होती है, ये 1 मिनट का नहीं 1 महीने का भी डिस्कशन हो सकता है, जहां आप ये डिसाइड कर रहे हो कि भैया SerDes क्या होने चाहिए किस किस टेबल के लिए। मतलब एक टेबल के लिए 1 महीने तक नहीं डिस्कस करोगे। जब आप पूरा अपना डेटा लेक डिजाइन कर रहे हो तो उस डेटा लेक में 50 टेबल्स होंगी, तो ऐसा भी नहीं है कि सारी टेबल्स का सेम ही फॉर्मेट रखोगे, कुछ आप एवरो में रखोगे, कुछ पार्कवेट में रखोगे। तो ये चीजें 1-1 महीना ले जाती हैं कि मेरा पूरा डेटा लेक का डिजाइन कैसा बनना चाहिए। गेटिंग इट? तो दैट इज लाइक यू आर डूइंग डेटा लेक डिजाइनिंग, वो सीनियर लोग करते हैं। ओके, एज इन more than say 6-7 years into this field, they do data lake designing, and these people are who? They are known as solution architects. आप लोगों ने सुने होंगे। Have you heard about this word, solution architects? किसी ने नो भी है तो बता दो, मैं समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है नो में। No problem, Gulzar. Thanks for that. Perfect. So for Gulzar, I'll explain it. So Gulzar, see, you come to me, see, I am a solution architect. For example, you have a problem at hand and you come to me, okay? So you came with a problem and I, being a solution architect, gives you the solution. Simple. You have a problem, I have a solution. So I am a solution architect. Okay. But now ऐसे थोड़ी होता है कि मैंने बोल दिया मैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूं तो हो गया। ये एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे साथ जुड़ गया। आई एम एन आर्किटेक्ट, एंड हु इज एन आर्किटेक्ट? हु बिल्ड्स द फाउंडेशन, कंसिडरिंग दैट इफ टुमारो यू वांट टू बिल्ड द टावर, आज 10 फ्लोर का है कल 20 भी का बनाना पड़ता है मान लो, तो मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए और मेरा पूरा टावर कितना सह सकता है लोड। मतलब आई विल नॉट ओनली टॉक अबाउट टुडे, आई विल टॉक अबाउट फ्यूचर ऑल्सो, कि फ्यूचर में कैसी रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं चीजों में, क्या इसी चीज को करने के 10 अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं एक ही काम को करने के, उनमें से बेस्ट कौन सा है। तो एक आर्किटेक्ट वो बंदा होता है जो आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देता है, वो आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस देता है, उसमें से हर सॉल्यूशन के प्रोज एंड कॉन्स उसे पता होते हैं, और फिर आपको एक इंटेलिजेंट डिसीजन वो अपना देता है कि आपके प्रॉब्लम के लिए आउट ऑफ दीज मेनी प्रॉब्लम्स, आउट ऑफ दीज मेनी सॉल्यूशंस, दिस इज द बेस्ट
why this is best, but what are the challenges with this also, and what are futuristic implications of this also. तो it is that important. तो अगर एक नॉर्मल बिग डेटा इंजीनियर इस अभी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के अंदर 10 बिग डेटा इंजीनियर्स काम कर रहे होंगे, तो अगर एक बिग डेटा इंजीनियर को मान लो महीने का 1 लाख मिलता है, तो इसको हो सकता है कि महीने का 6 लाख 10 लाख भी मिल रहा हो। ओके, तो इतना फर्क है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि इसने एक बार जब ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया तो उसी के वे ये जो बिग डेटा इंजीनियर्स है वो आंख बंद करके लग गए काम करने में। अगर इसने ही शुरू में गलत फाउंडेशन तैयार कर दी तो ये लोग 1-1 साल का प्रोजेक्ट होता है, इसका काम मान लो 1 महीने का है सिर्फ, उसके बाद इन लोगों का काम 1 साल का है। अगर ये गलत दिशा में दौड़ रहे हैं तो इनको रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि इनको तो दिशा इस बंदे ने बताई है। अगर इसने गलत दिशा में भगा दिया तो 1 साल वेस्ट हो गया, 4 रिसोर्सेस का सोचो कितना पैसा वेस्ट हो गया। तो इसीलिए इसको ज्यादा पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि भैया ये हमारा पैसा और टाइम दोनों बचाए और हमारे क्लाइंट खुश भी रहे। ओके गुलजार सर ये तो ठीक है, जैसे आपने बताया कि हम इसी, जैसे अभी आपने बताया कि अगर इसने कुछ गलत बता दिया तो उसे लॉस ज्यादा है क्योंकि हम उसी के भरोसे चल रहे हैं। उसने बोल दिया कि भैया पार्कवेट टेबल बना लो, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हुआ कि यार वो पार्कवेट की जगह अगर एब्रो यूज की गई होती तो और बेटर होता। अब उसने ये सोचा ही नहीं, तो दैट्स नॉट द राइट थिंग। फिर कुछ टेबल्स उसने ऐसी थी जो बोलते इंटरनल बना लो, लेकिन बाद में पता लगा यार ये तो एक्सटर्नल होती तो बेटर होता। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, और क्या क्वेश्चन है? With any field, data science, big data, it can be any field. It's not only present and future, it's past also. Means past की knowledge, present की knowledge, future की knowledge, उस फील्ड में क्या नया आ रहा है वो भी उसे पता होना चाहिए। एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को ये भी पता होना चाहिए कि मेरी फील्ड में जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं नए रिसर्च क्या चल रही है। ही शुड बी अवेयर अबाउट दैट ऑल्सो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एवरीथिंग। जबकि जो नॉर्मल बिग डेटा इंजीनियर है वो सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस कर रहा है। उसे बोल दिया भैया तू 10 हाइव टेबल बना दे और उसमें डेटा लोड कर दे, वो लगा पड़ा है, उस पर सिलेक्ट क्वेरी चला दे, वो कर रहा है। बट दैट्स नॉट द फन पार्ट, राइट? द इंपॉर्टेंट पार्ट of responsibility is different. Okay, so now moving ahead, what are different columnar surveys available to me? So we have RC, ORC and Parquet. So I want all of you to read about them, जितना आप लोग पढ़ सकते हो, all of these. RC is row columnar, this is optimized row columnar, and this is Parquet. This is best. This is best even when we will be working on Spark. Parquet is best to work on Spark also because of lot of things. Okay, so these are the surveys, the major surveys. So I am pinging on the group, so you can give it, so you can read about these. Okay, now, so these are different surveys. We saw these surveys, the how they look like. ORC is best when we will talk about Hive. ORC is best for Hive. Parquet is best for Spark because of lot of reasons. So RC is row columnar, ORC is optimized row columnar format. Okay, it's a optimized row columnar format which provides a high efficient way to store the Hive data. It was designed to overcome the limitations of other formats, improve performance when Hive is even reading, writing, processing, everything. It's not only good for reads or writes, it's good for read, write, processing, everything. These two words are very important. ORC file contains Bloom filters. Okay, I gave an interview like 4 or 5 years back, जहां पर ब्लूम फिल्टर पे मेरा आधे घंटे तक इंटरव्यू हुआ था।
सिर्फ ब्लूम फिल्टर्स पे हाफ एन आवर डिस्कशन. सो पॉइंट इज these words are very very important. Bloom filters, lightweight indexes. So don't take any of these words light. Okay. So this is how it looks like. We will talk about a few of them, not all of the file formats. So ORC file format is something like this, where if this is, say, your data. So if say for example this was your file, this file is split it into 250 MB. This is first 250 MB, another 250 MB, like that. Within now this data, this blue wala part is the actual data, but this green and orange is metadata. So your original file is splitted into multiple blocks, and each block not only contain data but two layers of metadata. The first is the index layer and the second is the stripe footer. So the header and the footer. The header is index data, and then there is this stripe footer. So I'm pinging you. Try to read everything from the Apache websites. They are best. कॉलम स्टोरेज के टाइप्स, बिल्कुल यही तो बता रहा हूं मैं आपको, कॉलमनर स्टोरेज के टाइप्स, आरसी, ओआरसी एंड एवरो. मतलब आई डिडंट गेट दिस क्वेश्चन एक्चुअली. Is your doubt clear, Vipul, or you have any question? Yes, columnar storages ही बता रहा हूँ ना मैं आपको, RC, ORC और Parquet. Vipul, you are there? No, Vipul. These are columnar storages. All of these are columnar storages. Okay. But what I am saying is, this on the left hand side is the world of big data, Hadoop. This is the world of big data. Okay. Either text formats, Avro formats, or columnar formats, right? But now the question is, what you are asking, that row based storage, right? So this is actually row based storage. Okay. Text based third is store the data in the row format. Means if this is the data, say this is column A and this is column B. Okay, Vipul? This is column A, column B. Here value is 1, value is 2, here value is 3, value is 4. Okay, बड़ा सिंपल रखते हैं इसको. मैं बाकी लोगों के लिए भी बता रहा हूं. अगर ये आपकी एक फाइल है जिसमें दो कॉलम है A एंड B और इसमें दो रोज हैं, एक ये रो है और एक ये रो है, तो अगर कल को ये फाइल स्टोर होगी रो फॉर्मेट में, तो ये दो ब्लॉक्स में स्प्लिट हो गई. मान लो पहला जिसके अंदर 1,2 आ गया और दूसरा जिसके अंदर 3,4 आ गया. मतलब एक पूरी की पूरी रो इसमें आ गई. अब यहां क्योंकि मैंने दो ही रो लिए हैं तो मैंने एक यहां डाल दी, एक यहां डाल दी, लेकिन एक के अंदर मल्टीपल रोज हो सकती हैं, हजारों भी हो सकती हैं, 1000 इसमें 1000 इसमें. तो ये होता है रो बेस्ड स्टोरेज. ओके. लेकिन कॉलम बेस्ड स्टोरेज क्या होगा कि आपकी इसमें भी दो फाइल बनी. ये थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको देखने में. मैं इसको आसान करता हूं पहले. ये कैसे स्टोर होगा, 1 और 3 वो एक साथ स्टोर होंगे एक फाइल में, 2 और 4 वो एक साथ स्टोर होंगे इस तरह से. तो अल्टीमेटली जो फाइल होगी उसमें डेटा होगा 1, 3 एंड 2, 4 इस तरह से. ये एक्चुअली इस तरह से होती है. आप इस तरह से समझ लो, ज्यादा आसान रहेगा कि ये एक जो फाइल है ये कॉलमनर स्टोरेज है, 1 और 3 एक साथ, 2 और 4 एक साथ.
तो एक तरह से ये 1 और 3 एक साथ, 2 और 4 एक साथ, इस तरह से। वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दिखाने का बस तरीका है। तो यहाँ पर 1 और 2 एक साथ थे, यहाँ 1 और 3 एक साथ है। ओके, अब बस इस फॉर्मेट में एक प्रॉब्लम ये है, और अगर मैं फायदा बताता हूँ, इसका फायदा तब है जब आपकी जो रीड क्वेरी है, सिलेक्ट क्वेरी, वो सिलेक्ट स्टार वाली क्वेरी हो, लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अ टेबल, दैट मीन्स यू वांट टू सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स, so it's good if they are stored together, all the columns of a row. But if you say select A, you say select A from the table, then that means you want to only select a particular column. Then why to read the another column? I don't want. So when your queries are such that they always want to access a particular column only, select A or select B, not like select star, then you will use column based storage. Okay, so columnar storages are RC, ORC and Parquet, but the text based storages are all columnar storages. Even the binary data is also stored in the row format. Okay, one row, then second row, third row, like that. Okay, guys, so these are important. Read about these. तो मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बता रहा था कि आरसी अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि उससे भी ऑप्टिमाइज्ड आ गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये यूज होता है, लेकिन जो पार्कविट, जो स्पार्क पे काम करते हैं, वो जो मैक्सिमम पार्कविट यूज करते हैं। ये आपका ओआरसी का फॉर्मेट है। I pinned you guys this link, you can definitely read about it. वही है, create the table stored as ORC, that's it, stored as ORC, just ignore this is not needed. इसका अलग पर्पस है, ये कंप्रेशन कोडैक है, वो हम अलग से बता सकते हैं। तो that's it, it's done। जैसे अभी मैं stored as Parquet किया था। There is this bloom filter thing, right? You will see bloom filters, you will see the indexes. So try to read it, it may be too much, but just try it. And each stripe is of 250 MB. Okay, and then the final is the Parquet file format. The Parquet file format, which is the best in today's world, because we use Spark in today's world. So this is the Parquet website. Try to understand this, how the Parquet, so this is how the Parquet file is. So see, what is happening is, आप तो डेटा सिंपल फॉर्मेट में ही देखते थे आज तक, लेकिन जब इन फाइल्स को आप खोलोगे हडूप में, तो दे विल कंटेन ऑल दीज मेटा डेटा, टू मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, बट देयर इज बेनिफिट ऑफ दीज थिंग्स। ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट पार्केट फाइल फॉर्मेट, पार्केट फाइल फॉर्मेट को रैम बहुत ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वो रैम में ज्यादातर रहना पसंद करती हैं, इसलिए स्पार्क के साथ यूज किया जाता है उनको। इसमें भी आपका, अगर आप देखोगे तो फाइल का जो भी डेटा है वो रहेगा, लेकिन उसके साथ में इनके कुछ फुटर्स भी रहते हैं, हेडर फुटर, लाइक दैट, and data is divided into some row group 0, row group 1, like that. Okay, so there is the actual file, and then there is this metadata related content. So this is the schema designing, like as I was saying, like the solution architects, they look into the data lake designing. So these kind of documents are quite often created. Okay,
So before we move ahead, any question? Okay, so let's go to the next level. Okay, so guys, we will just go through certain questions, quizzes, and then we will wind up the session. Okay, so can you guys start asking answering this? Guys, you also can go to this website and solve these. And this one, it's deleting the table, right? It's not deleting the data. There is a difference. It's saying you have to delete the table, not the data. So it's drop table. This one, to show the data of a table, is the select query. Hive can work both in the local and the MapReduce mode. I didn't told you that, so let's leave it. That's actually related to something pig. We will talk about that. Yeah, Gomini, ignore it. You can ignore it. I am not saying true or false. I am not even going into that. Ignore it. But you know that Hive can work in MapReduce mode, Spark mode, and the Tez mode, right? Those are the three modes. So ideally, it does not work in the local mode. So that's false. मतलब local Linux वाला जो system है, that's the thing. In if the metadata for table is stored in no, not A, Vipul, it's metadata. So metadata is in the meta store. Data is in HDFS, okay? So the answer is meta store. When an external table is dropped, both the table and metadata is deleted. This one, good, very good. When an internal or a managed table is dropped, what is the answer? The default location for storing data for Hive tables is it's user Hive warehouse. This one actually, guys. User Hive warehouse. What Hive cannot offer. Please see that. So Hive cannot do this. Very good, Nitika. This is what? O online transaction processing. For that, so we have databases, right? Like ATMs and all. If you have to handle. So we discussed it initially, right? So it's not for transactional processings. It's for RDBMS. Yeah, correct, Nitika. Hive is just a data store for analytics. So there are two things, OLTP and OLTP. OLAP. So databases do OLTP, but Hadoop is for OLAP, online analytical processing. Hive and Hadoop is for this, OLAP.
Gulzar, you have any question you are asking? I'll do that. Okay. So what I was referring to, guys, this is my website. If you want to read through, do that. Here I have explained a lot about data science and big data. Okay. And certain things about blockchain and IoT and quantum computing in case you are interested. Uh, however, I was looking for something else. 1 second, where is it? Okay. So this is about the big data Hadoop. You can read about these components, yeah. So this is what I wanted to share with you. Just read about this. Those who don't know what is OLTP and what is OLAP. Okay, so you can refer to my blog for these things. This was written somewhere in 2012, almost 8 years back. Too much time, but yeah, sometimes during the same month. So you can definitely get your concepts clear from these. Okay, so those who don't know OLTP, OLAP, and all, they can definitely check that. Okay, Gulzar, and others. This is for that thing. This partitioning, Gulzar, I'll explain later. What is partitioning? That's later. And okay, I cannot store this. So Nishtha, you are saying this is the correct option, huh? We can definitely. Oh, okay. Okay, no problem. Last one, partitioning of table in Hive creates more या सब डायरेक्टरीज, ये मैं बाद में इसको अभी हम टच करेंगे. सब डायरेक्टरीज अंडर द टेबल, ये बी ऑप्शन है इसका वैसे, बट हम पार्टीशनिंग की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इसको अभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. ओके, सो दैट्स अबाउट इट. So we have right 10, wrong 0. So guys, you should definitely do these things. Okay. There are certain videos, you can also look through them. Okay. So before I end the class for today, just one important thing, let me tell you. So when we talk about Hive, important it is architecture, which we know. Then we should know the internal external table thing. Okay, internal versus external. Then the other thing is the third is definitely. In the next class, we will, but hands-on we will do in detail definitely. But the another important topic is now partitioning and bucketing. Okay, in interview they ask you Hive architecture, internal external tables, third is, and this. So partitioning, bucketing we will talk about in the next class. It's something like you have a table. Okay, this is the HDFS folder. For a table there will be HDFS folder, right? You
want to create certain subfolders inside a main folder. Okay, so that multiple mappers can run parallelly on each of these folders, or sometimes you only need to process a particular folder. You don't need to read all the other folders. So that also speeds up your performance if you organize the data in a proper way. You avoid reading the unnecessary data of that table. So if a table contains millions of rows, you don't want to read millions of rows. You want to organize data in such a way that you read only what is necessary and ignore the remaining, so that your query performances are very fast. Okay, so that's where partitioning, data level partitioning, and creating the buckets, small buckets of data, or small partitions of data is necessary. So we will talk about partitioning and bucketing in detail. So what I want you guys to at least practice this internal external table creation, create some surveys like we did on this. We were doing on that, right? There was a Hue link, right? So do that over Hue. Try to read about these surveys, and if you want, read about this partitioning bucketing, but I will tell you in the next class. So for now, you guys should read more about row-based storage and column-based storage and these surveys, different surveys. One second, guys. Higher vision. Okay, guys. So please read more about these things, and just keep practicing what you are doing, either machine learning or this. And we will now connect on Thursday with more hands-on on Hive and all. And I'll also try to upload that virtual machine. Because of just some health concerns, I am not able to do that for at least couple of days. I'll do that and will share with you. Yeah, Gulzar, tell me. अच्छा सर, यही कि क्लास के शुरू में जो आपने पढ़ाया था उसके टॉपिक्स की लिस्ट अगर मिल जाए तो। क्लास के शुरू में मैंने क्या पढ़ाया था? एक मिनट। नहीं, मैंने आज जो भी पढ़ाया है वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं पिन कर देता हूँ अभी, रुको यहीं पे। हाइव में मतलब व्हाट यू नीड टू स्टडी इज, हाइव में मतलब DDL, DML, बस ये दो चीजें। हाइव के जो हम, जिसको हम हाइव QL भी कहते हैं, या इसको हम HQL भी कहते हैं, ठीक है। और इसका प्रैक्टिस लिंक तो मैंने आप सबको वो ऑनलाइन Hue वाला बता ही रखा है। बस यही आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर करने हैं अपना कॉन्सेप्ट सारे, ठीक है। और उसके बाद आपको सिलेक्ट क्वेरीज जो होती हैं वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अ टेबल एंड ऑल, और इसमें भी मेनली ग्रुप बाय, राइट, ग्रुप बाय कैसे काम करता है, तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा गुलजार, after that you can go into the surveys, the type of surveys,
And when the survey thing is clear, the last thing is the partitioning bucketing. Thanks guys, thanks to all. तो ultimately मैंने यहाँ पे ही बता रखा है, एक सेकेंड. अल्टीमेटली आपका यही हाइव का सिलेबस है. हाइव आर्किटेक्चर, हाई एचक्यूएल या क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें डीडीएल डीएमएल आता है. सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें सबसे ज्यादा हैंड्स ऑन करना होगा क्लास में, वो सिलेक्ट क्वेरीज पे हम करेंगे, डिफरेंट सिनेरियोज लेके. इंटरनेशनल टेबल, सर्डिस, पार्टीशन, तो ये ही आपका सिलेबस है टोटल. तो अभी यहां तक आप पढ़ सकते हो कुछ भी, इसको अभी रहने देना, ये मैं बाद में बताऊंगा. ठीक है गुलजार, आपको ये इन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है अभी के लिए, जो हाईलाइटेड है. ओके, and then you can do the hands-on parallelly on that link. Okay guys, thanks a lot. We will meet on Thursday and Friday 4 to 7. Thank you. Karan, you can close the session. Thanks a lot. Okay sir. Okay.